Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? कैसे हैं आप और how are you doing? Do let me know in the comment section, and today we're gonna do some hairstyles with the heart shape. I know we don't celebrate Valentine's Day, but there are lots of people in the world who do and does that. But if you are not even celebrating Valentine's Day and you want something heart shaped in your hair, then you click the perfect video because it's not one style, there are lots of styles that you can definitely try. So let's start the video. And on we'll Well, if you are new to my channel, then feel free to subscribe to my channel because I always share this kind of beautiful hairstyles. And now we are going through some tutorials. I explain these tutorials for you. This way we can have a little chit chat and I can convince you to subscribe to my channel because you're gonna love my video. Well, I try to make it interesting for you and get you stay connected. So all you need to do is do a 3-strand braid. First you do a side slit from the front and then you do a 3-strand braid. What you need to do is divide that braid into 3 strands and do a smaller 3-strand braids and turn it into a heart like I have shown you. Okay, on the other side you do 3 small tiny thin braids and you connect them with one rubber band at the back. Now you can definitely embellish them or decorate them with all sorts of pins. Now let's move on to the next hairstyle. This is similar one but in a different hairstyle. All you need to do is make smaller 3-strand braids on different parts of your hair. You can pony them at the front and gather them in small ponies, and then you can do a 3-strand braid at the bottom, and at the bottom you make heart shape with this with lots of rubber bands. All you need is lots of rubber band and you can make these shapes. So this time we are putting 3 heart shapes at the back, and I think little girls are gonna love this if you try them. Especially little girls, they have a very fantasize this heart shape and they love presenting their love with the shape of this heart. So I think this is a very cool and beautiful hairstyle that you can do on your little girls. They're gonna love it, and if they love them, so if you are liking this video, then all you need to do is like this video and subscribe to my channel. That would be an amazing gift for me as well. So as you can see, I have braided the 3 little hearts that I made them earlier, and I am incorporating them with the 3-strand braid, or you can say one-sided French braid, and I'm braiding them and I'm making sure that these hearts stay at their places and not move around when the little girl moves or runs, so they don't get scattered everywhere and they should stay at their places. So I sure you like it, and if you like that, let's move on to the new hairstyle because there are lots of new hairstyles that you can definitely try and get inspired, and yeah, I love them. चलो जी, जिनको समझ नहीं आ रही उनके लिए एक नया हेयर स्टाइल भी लेकर आ रही हूँ। काफ़ी इजी है और हार्ट शेप तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है बालों में। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं की तो बच्चियों के हेयर स्टाइल भी ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर यू गना लाइक दैम। ओके जी, करना क्या है, आपने साइड से 3-strand ब्रेड्स बनानी है। आप चाहे तो फ्रंट से इसको फ्रेंच टेल से भी बना सकते हैं, और बैक पे आपने लेकर आना है और 3-strand ब्रेड से इसको एंड पे तीनों को ज्वाइन कर देना है। तीनों को नहीं, दोनों को ज्वाइन करना है। ब्रेड्स तो 2 ही बनी है ना, 3-strand है तो क्या हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने साइड से सिंपल बल लेने हैं और उनको रबर बैंड कर लेना है। अब उन रबर बैंड्स को आपने नीचे से बाहर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ आपने फ्लिप करना है, नीचे रबर बैंड लगाकर, और उसको फिर आपने एक हार्ट शेप में फ्लिप कर देना है। एंड वॉला, आपने कभी सोचा था कि इस तरह भी हार्ट शेप बनाई जा सकती है और बालों में कितनी खूबसूरत लग रही है।
बस आपने करना ये है कि उसके बाद आपने दोबारा से उस पोनी को आपने दोबारा अटैच कर देना है, क्योंकि इससे जो पोनी है वो इधर उधर नहीं हिलेगी और इस तरह की पिन्स लगाने से भी बाल आपके काफ़ी फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा जूड़ा बनाएंगे और इसको हम बनाएंगे जी चॉपस्टिक की मदद से। यहाँ पे तो वैसे चॉपस्टिक ही यूज़ ही है, अगर आपके पास चॉपस्टिक ना हो तो कोई मसला नहीं यार, पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपने एक पोनी टेल करनी है और उसके दरमियान में आपने डालनी है जी पेंसिल, और उसके बाद आपने दोनों पोनी को दो हिस्सों में डिवाइड करके उसको ऊपर से नीचे की तरफ आपने फ्लिप करना है और फिर आपने नीचे उसको बांधना है रबर बैंड। अगर आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेट मी शो यू नाउ, दैट्स मच बेटर। चलो जी, इस तरह आपने करना ये है कि आपने नीचे भी एक दोबारा आपने पोनी करनी है और फिर उसको ऊपर की तरफ आपने फ्लिप करके तो दोनों पोनीज को, दोनों फ्लिप्स को आपने किसी पिन से ज्वाइन कर देना। So yeah, this is my video. I hope you like it. Thanks for watching. Allah Hafiz.